Hello friends, this is Bashir Ahmed Gujri with the second presentation of the chapter What, Where, How and When. Subject Social Science. Name of the book Our Past is First, Class 6th. Yes, this presentation is meant for the history students of class 6th. यहाँ याद रहे कि ये प्रेजेंटेशन बनाने में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 6। इस प्रेजेंटेशन का लर्निंग आउटकम रहेगा द लर्नर डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ सर्टेन सोर्सेज इन reconstruction of history. That means at the end of this presentation, learner को ये समझ में आए कि how we use sources in reconstruction of history. Finding out about the past. कैसे हमें past के बारे में जानकारी मिलती है. Yes, for the students of class 6th, many ways have been mentioned in our NCERT book, and these are reading manuscripts, studying inscriptions, remains of buildings made of stone and bricks, paintings, sculptures, and remains of some plants and animals. That means these things provide certain information about the past. Manuscripts क्या होते हैं? These are written records. पहले ये याद रहे कि these are written records written long ago, written by hand, because Latin word manu means hand, and usually written on palm leaf or on birch. Subject of the manuscripts found in India from the ancient times is religious beliefs and practices, lives of kings, medicines and sciences. That means जो manuscripts ancient India के हमें मिले हैं उनमें कहानी है about religious beliefs and practices, about lives of the kings and about medicines and science. Inscriptions. What are inscriptions? Inscriptions क्या होते हैं? पहली बात इसमें भी कि these are written records, लेकिन written on relatively hard surfaces like stone or metal. And subject of the inscriptions we have found in India of the ancient period. इनका सब्जेक्ट क्या रहा है? Sometimes kings got their orders inscribed. Some men and women recorded what they did. Kings often kept records of their victories in battles. That means one is we have inscriptions. One is we are able to study these inscriptions. We can have the information about the orders of the kings. We can have the information about what men and women did in the past. We can have the information about the kings and their victories in the battles. In this way, inscriptions prove a reliable source about our past. Remains of buildings made of stone, bricks, paintings and sculptures. Yes, sculpture, paintings या bricks या stone से जो buildings बनी है, these are also the sources for knowing about the past. And इसके लिए हमारे सामने क्वेश्चन है, who are archaeologists? Archaeologists study remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture. Archaeologists buildings की स्टडी करते हैं जो स्टोन्स और ब्रिक्स से बने हुए हैं. आर्कियोलॉजिस्ट्स पेंटिंग्स और स्कल्पचर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वही इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखते हैं so that we can know about the past.
They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins of the past. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोदते हैं, जमीन के नीचे से ये वाली चीजें देखने की कोशिश करते हैं, इनको एक्सप्लोर करके इनको पढ़ के हमारे सामने रखते हैं। तो कौन से टूल्स, कौन से वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स उनको मिलेंगे जमीन के नीचे से, विच आर यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, bones or baked clay and material, that means imperishable material से जो बने हुए हो, so that कि तब से आज तक वो जमीन में मौजूद है। Only such types of the things archaeologists can find at an excavation site. तो अब सोर्स क्या रहा? What is source? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. एक बार सोर्स हमें मिले, एक बार हम सोर्स को पढ़ पाए, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about the past. That means क्या अब हम डिटेक्टिव की तरह सोर्स को पढ़ के, सोर्स से क्लूज लेके पास्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? चलो देखते हैं। और यही हमारे लिए असेसमेंट है। बी अ हिस्टोरियन, बी अ डिटेक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्ट पास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंडिंग। पहले देखते हैं, ये फोटोग्राफ जो है ऐसा ही एक फ्रोड यानी खोदा हुआ जमीन, एक फील्ड कालीबंगन में मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का। और ऐसे ही उसमें भी ये फरोज जो है, एक तो ऐसे है, दूसरा आप देख लो इसमें इसको क्रॉस में भी ऐसे फरोज है। दैट मीन्स क्रॉस्ड फरोड लैंड ये है। और ऐसा ही क्रॉस्ड फरोड लैंड एक्सकवेट हुआ है एट कालीबंगन। अब इस क्रॉस्ड फरोड लैंड से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है? आपके लिए आसान किया गया है, आपको एग्री या डिसएग्री करना है। क्या ये जानकारी हम इससे हासिल कर सकते कि नहीं? द फरोड लैंड सजेस्ट्स existence of subsistence base of an agriculture society. Cross furrows suggest two kinds of crops were grown simultaneously. Intensive cultivation was practiced. The area might have been densely populated. So it is up to you whether you will agree or disagree. And if you agree or disagree with it, you can accordingly make or reconstruct a history, a piece of the history from this visual. Be a historian, assessment 2. Be a detective and reconstruct past from the following finding. पहले इस फोटोग्राफ को देखिए। ये इंडिया का आउटलाइन मैप पे 3 जगह दी गई है। एक तो यहाँ मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और बहुत दूर यहाँ एक जगह है विच इज नोन एज कोटदिची। कोटदिची इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द इंडस। और उसके बाद यहाँ राजस्थान में कहीं कालीबंगन। बहुत दूर दूर ये 3 इलाके हैं। अब चलो देखते हैं हमारे लिए असेसमेंट क्या है, हमें डिटेक्टिव कहाँ बनना है। You can fill in the blanks with the words like sharing, communication, trade, etc. to reach the conclusion. Well, decorated wheel thrown pottery has been found at Kotdiji. Same kind of pottery has been
reported from Mehergarh and Kalibangan. That means कोर्दजी में decorated wheel thrown पोट्री मिली है। इंदस टाइम की, इंदस वैली सिविलाइजेशन की टाइम की ये पोट्री मिली है। और मेहरगढ़ से भी इसी टाइप की पोट्री रिपोर्ट हुई है कि वहां भी मिली है। एंड सेम टाइप ऑफ पोट्री हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम कालीबंगन। इन तीन जगहों पे एक टाइप की पोट्री, इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एक टाइप की पोट्री अगर हमें मिलती है, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम इट? और आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। दिस सजेस्ट्स डैश ऑफ पोट्री ट्रेडिशन। इट implies greater dash among the agricultural communities. I hope कि ऐसे ही असेसमेंट जब हम बार बार खुद को ऐसे असेसमेंट की तरफ एक्सपोज कर लेंगे, तो we will definitely, like historians, reconstruct the past. This was all in this presentation. Thank you. With regards, Bashir Ahmed Gujri.